Hare Krishna, welcome all the devotees. Today we'll be discussing the standard of happiness for human being, which is described in fifth chapter, specifically verse number 9, 20, 21, and 22, and 23 also. So these four verses we are going to discuss today. So we'll start with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhishya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maiya ki jai, Shri Shri Nitai Gaurang ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So yesterday I had announced one thing about Prabhupada's book, Sing, Dance and Pray, written by Hindol Sen Gupta. So today again I'll just remind you all that all of you can get a copy from Amazon, the biography of Srila Prabhupada by the name Sing, Dance and Pray, written by Hindol Sen Gupta, who is a very famous writer. So you can purchase, if you have not booked, you can get a copy of from the Amazon, get a copy of it, and you can suggest your friends also to read this, at least go through this. Anyway, we are reading so many nonsense and useless literatures which are not having any use. So better utilize time nowadays, holidays are going on. So all of us can utilize this time in reading something which is noble, which is, glorious, which is very pure, and about a personality who has really done miraculous activity, but people are unaware and therefore suffering in this material world. People are suffering because they're not aware of Prabhupada, what contribution Prabhupada has made in this world. Prabhupada said, this books what I'm writing, Prabhupada, when whole world is sleeping, Prabhupada would get up 12 o'clock in the night and he would translate books for all of us till 5 o'clock. He would barely sleep. And even Shyam Sundar, the secretary of Prabhupada, when he was there for 7 months, he did not see Prabhupada sleeping even 1 second. He was flabbergasted. Really, he was amazed. What kind of personality I am serving? He's not sleeping. 7 months. What is 7 months? Even 1, 2 days we don't sleep, we get mad. Here is a personality, Shyam Sundar, he is a teenager, he is 20 years, 20, 21. And he is not able to cope up with Prabhupada. Prabhupada is 75. He is old man, but active so much that uh, nobody can be so active, hyperactive like Prabhupada. Prabhupada traveling all over the world, from America to London to Europe. Finally, he reached India in Vrindavan. There in India, and 7 months have passed, and Prabhupada has not even taken 1 hour sleep.
continuously from here, there. He's just traveling and preaching and meeting the people, guiding his disciples. Meetings are arranged with so-called celebrities, and he's meeting them, guiding them, instructing about Krishna consciousness, how Krishna consciousness is only thing which is missing in today's society, and rest everything you have, but you are not happy. So only thing, if you take this Krishna consciousness, you can be happy. Like very boldly, extensively, he's preaching in all over the world Krishna consciousness. Finally, when he reached Vrindavan, then Shyam Sundar thought that he Prabhupada ko kya ho gaya? He's not sleeping. What has happened? So Prabhupada went in Vrindavan, and in the night he just turned off the light and wanted to take a little rest. So Shyam Sundar saw that Prabhupada has now today he has turned off the light of his room. Now he will sleep. So Shyam Sundar, disciple of Prabhupada, he wanted to see how Prabhupada sleeps. So slowly, दबी दबे पैरों से slowly चुपके से जाके प्रभुपाद के रूम में झांकने लग गए कि whether Prabhupada is lying down to sleep. And जैसे ही वो गए रूम में, प्रभुपाद immediately spoke out, Shyam Sundar, you have come here to see whether I'm sleeping. Shyam Sundar was surprised. Oh, Prabhupada knew that I have come. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि श्याम सुंदर, you have been serving with me, but you have not yet known who am I, what is my identity, what is my personality, what is my position. You have not known. I am not of this world. I am not a material conditioned soul like all of you. I have been sent by Krishna personally in this material world to write books for all of you. The main business of mine to descend in this material world is to write books so that you can understand the right knowledge. What is the correct understanding of this world? Why am I suffering? Why this miserable life I'm going through? What is the eternal life? Is there any life which is eternal? Is there any way where we can achieve a permanent happiness for which I'm always anxious? I'm always craving for that enjoyment, but I'm not getting. Only I am getting is distress. So I have come here to give you a hint by writing books that yes, there is a place where you can go and enjoy unlimited happiness, that is spiritual world. And to convince all of you, I have descended in this material world to write books. And what I'm writing, these writings are not ordinary writings. This is not written by ink. This is written by fire of transcendental knowledge. Anybody reads this knowledge, his illusion will be mitigated, it will be disappeared, and he will achieve a bright, crystal clear consciousness. He will become devotee of Krishna. He will understand who is Krishna, who is me, and what is my relationship with Krishna. And he will realize that I belong to Krishna and I must go back to Krishna and lead my real life, not real life. Today we are leading real life, therefore we are frustrated. This is a foreign land. This is foreign nature for us. If you take fish out of water and put it on the ground, whether fish will be happy, no matter how much luxury, how much amenities, how much, all those things you supply to the fish is not going to be happy, because the atmosphere, environment is foreign for the fish. The same way, this environment which we are leading in this material world, it is foreign. We are not an inhabitant of this world. हम लोग refugee हैं. We are all aliens here. So we have to go back to that world, spiritual world. So to make us understand very strongly, boldly, Prabhupada undertook so much of pain. So I request all of you, in your busy schedule, I know you are busy, but that busyness is for what? Temporary thing. And since millions of lifetimes we had been
trying to adjust and get settled in this temporary world, but we haven't till now. We haven't till now get adjusted to this material, in this material, and become happy. So now again also we are becoming very busy for what? Temporary things. So temporary things anyway, everything is given to all of us. According to your destiny, you will get, don't worry. Destiny we have very nicely discussed in 2 classes, that circle of destiny you cannot change. Happiness and distress is fixed. So as a matter of duty, you just go on performing your duty, you will get your result. So don't extra burden yourself. Don't try to become, you know, over smart than Krishna. No, I will get more than what Krishna is trying to me. No, just go on doing your duty. But most important thing is spirituality, your own real life, not real life. Real life, you take out time, read about Prabhupada, you'll get inspired. The potency is there in that pastimes of Prabhupada. So therefore, I am suggesting, enforcing that all of you today itself, if you don't have booked, immediately order a copy of Sing, Dance and Pray, and also suggest your friends to purchase and read, go through the endeavors, the struggle, hard work, efforts which Prabhupada has taken for all of us to build this moment, to build this organization from where today we are benefiting and trying to get some knowledge by which we are able to, understand what is reality. So all of you can today itself can get the copy. Now I'll share the screen about the 5th chapter which we are discussing, and I'll today do one activity, which is I'll be just reading the translation and purports I have highlighted. So purports, I'll ask some of you to read, any one of you to read and explain. So this 20th verse, Krishna says, "Na praristet priyam prapya, no dvijit prapya cha priyam, sthir buddhir asamudho brahmavid brahmani stitah, na praristet priyam prapya." जब आपको प्रियम प्राप्त, जब आपको डिजायरेबल चीज मिल जाती है, जो आप चाहते हैं, प्रिय, जो आपको प्रिय चीज है, प्लेजेंट चीज मिल जाती है, तो न प्रहृष्टेत, यू आर नॉट रिजॉइसिंग, यू आर नॉट इलेटेड। नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, और अप्रिय चीज जब मिल जाती है तो आप उद्विग्न नहीं होते, यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड। स्थिर बुद्धि, एंड योर बुद्धि स्थिर, एंड असमूढ़, यू आर नॉट मूढ़ा, यू आर नॉट एस, यू आर नॉट डंकी, यू आर नॉट who is not having intelligence and got disturbed about silly things. You are intelligent. Ashamudho. Brahmavid Brahmani Sthita. He is situated in transcendental knowledge. So the translation is, a person who neither rejoices upon achieving something pleasant, nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, unbewildered, and who knows the signs of God, is to be understood as already situated in transcendence. See, what a translation, what a understanding Krishna is giving. Don't get elated when you get pleasant things, and don't get lamented when you get unpleasant. Who is self-intelligent? You are intelligent, unbewildered, asamudho, unbewildered, asamudho, and who knows the signs of God. Brahmavid, vid means to know, Brahma means God, signs of God. Brahmani sthita, is understood to be situated in transcendent. He is Brahmani sthitah. So now the purport, anybody can read. Who will read this purport? Ashish, you read the purport. The symptoms of the self-realized person are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self. He knows perfectly well that he is not this body, but is the fragmental port on one of the supreme personality,
portion, fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. This steadiness of mind is called sthira buddhi or self-intelligence. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of the absolute truth, Yes, namely बस Brahm. बस. So यहाँ पर Prabhupada is writing that because he knows perfectly well that he is not this body, he is the fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. ये अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे पास है कि हम एक शरीर नहीं है, हम भगवान श्री कृष्ण के एक फ्रैगमेंटल पोर्शन हैं, हम कृष्ण के हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, वी आर कृष्णास. तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर मिल जाती है तो बॉडी को खुशी मिले या दुख मिले, आई डोंट बॉदर. जैसे एक जोकर होता है, एक ड्रामा में जोकर होता है, उसको चाहे मारो चाहे पीटो, इज इंडिफरेंट. चाहे उसको कुछ बहुत बड़ी चीज मिल जाए, राजा का फेवर मिल जाए उस ड्रामा में, चाहे उसको कोड़े से मारा जाए, लेकिन he is there indifferent just because he knows I am doing a drama, I am just enacting in this drama, my real life is outside this drama, and in real life I am not getting beaten by anybody. I have a position, my position is very nice, here I have just come to play a role, that's all. इसलिए वो उसको कुछ मिल गया तो खुश नहीं होता. अरे ड्रामा में कोई जैसे मूवी में होता है ना, मूवी में आपने देखा होगा, मूवी में कभी कभी जो एक्टर होता है वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है, और किसी किसी मूवी में वो तो एकदम पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन में है. तो क्या उससे वो एक्टर डिस्टर्ब हो जाता है? नहीं डिस्टर्ब होता, बिकॉज दैट एक्टर नोज आई एम नॉट अ कैरेक्टर ऑफ this movie, just I am playing a role, my real character is outside the movie. So like that we understand. So इस अंडरस्टैंडिंग में अगर आप हैं, ये जो लाइन है रेड वाली, इसको अगर आपको अच्छे से पता है, तो कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, you will just continue your life, you will just perform your duty nicely, and and just going on in your life. When the time will come, everything will be unraveled, everything will be unfolded, and you will get everything whatever you are destined to get. Okay, so this is the understanding, very important understanding. Why not to get disturbed, why not to get bewildered? Today आज देखो लोग इतना bewildered हैं, क्यों? क्योंकि ये understanding नहीं है लोगों का. Okay, next we'll go. Then Krishna says, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते. अक्षय मीन्स इनपेरिशेबल, सुखम मीन्स हैप्पीनेस, अश्नुते मीन्स एंजॉयज. ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? Such a liberated person is not attracted by material sense pleasure or external object. कौन से पर्सन? ये जो इस स्टेज में है. One who is not happy when he gets something, when he is not disturbed when he does not get something. So ऐसे लोग जो कि इंटेलिजेंट है, जो bewildered नहीं है, जो भगवान के बारे में जानता है, ऐसे लोग is not attracted to material sense pleasure. वो material sense gratification से attract नहीं होंगे, but is always in trance, enjoying the pleasure within. अब ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहा है, बाहर की चीजों में इंडल्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी लाइफ बड़ी मिजरेबल है. No, he is enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness. You see, a self-realized person who is in transcendence, he is realizing unlimited happiness. He is experiencing unlimited happiness. For क्यों? क्योंकि he concentrates on the Supreme. He knows that I belong to Krishna. My nature is to be with Krishna, to serve Krishna, to go back to Krishna. So just to contemplate, he just meditating on these positions of his, a very bright position of his, and by just contemplating and meditating, he is enjoying.
फॉर एग्जाम्पल सपोज थर्ड ईयर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको इंटर्नशिप लगा, एंड इंटर्नशिप में आपको जो कंपनी है वो आपको ऑफर देती है, यू कम टू यूएस। यूएस की कंपनी आई आपको इंटर्नशिप में, आपका हो गया, एंड यूएस कंपनी हैज ऑफर्ड यू टू, है ना, कम टू यूएस नाउ, और बोलिए कि वहीं से आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, यू गेट पीपीओ एंड देयर ओनली यू कैन गेट सेटल्ड। नाउ जस्ट बाय गेटिंग दिस, permanently you can be there and enjoy your life, and college and all I will discuss with the management and you'll get a degree also, don't worry। कभी कभी होता है ना, आप थर्ड ईयर में अगर चले गए तो आप फोर्थ ईयर की डिग्री मिल जाती कॉलेज से, एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाती। सो नाउ अब जस्ट थर्ड ईयर आपको कंप्लीट करना है। नाउ व्हाइल कंटिन्यूइंग योर थर्ड ईयर यू आर जस्ट बाय थिंकिंग कि मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा वहां, माई लाइफ विल बी दिस दैट, मुझे थिंकिंग मेडिटेटिंग यू आर एंजॉइंग इवन टुडे, यू हैव नॉट गॉन, अभी अभी गए नहीं है, बट जस्ट बाय थिंकिंग यू डिस्कस अमंग योर फ्रेंड्स, अरे यार मैं वहां जाऊंगा, वहीं सेटल हो जाऊंगा, मैं तो इतना कमाऊंगा, ये करूंगा, अपने फ्रेंड्स में भी आप डिस्कस करेंगे, एंड यू योरसेल्फ विल एंजॉय। यस और नो? This is called meditative pleasure. You are meditating upon that particular scenario and you are enjoying. For material things we are enjoying so many things, so much, what to speak of spirituality, which is offering you eternal happiness. After going back to Krishna, you'll not come back and you'll not suffer here. So what enjoyment a person can get by thinking all these things. So that's how he enjoys unlimited happiness, because he is meditating on the Supreme. ये लाइन यमुनाचार्य ने बोला है। यमुनाचार्य साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े राजा थे, और जब राजा थे तो उन्होंने बहुत सारी रानियों के साथ एंजॉय किया था, हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स आल्सो, बट व्हेन ही बिकेम डिवोटी ऑफ कृष्णा, यमुनाचार्य, he was Ramanujacharya's disciple. So when he understood his real position about Krishna consciousness, then what does he say? You see, यदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामना उद्यतरन्तुमासीत् तदवधि नारी संगम स्मर्यमाणे भवति मुख विकारः सुष्ठु निस्तीवनं च। The translation is, since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him. See, since जब से मैं भगवान श्री कृष्ण की ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में इंगेज हुआ हूं, तब से न्यू प्लेजर, न्यूअर एंड न्यूअर, ऐसा नहीं कि वही मोनोटोनस, वही पुराना एंड ड्राई, रिजेक्टेड, pale happiness I am now and again enjoying. No, newer and newer pleasure I am going on enjoying since जब से मेरा माइंड लगा है भगवान कृष्ण की सेवा में। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वेन एवर आई थिंक ऑफ सेक्स प्लेजर, क्योंकि वो उन्होंने अपने अर्ली लाइफ में ये सब चीजें किया था, तो बोल रहे हैं जब मेरे माइंड में कभी कभी याद आता है तो क्या होता है, आई स्पिट एट द थॉट एंड माई लिप्स कर्ल विथ डिस्टेस्ट। जस्ट सी व्हाट realization and experience is going through while doing Krishna bhakti. So that kind of enjoyment we all can experience when we engage ourselves. This engagement is very, very important. Now, engagement means what? How to engage in Krishna consciousness? Engagement means chanting. When you are chanting Hare Krishna, you are engaged. When you are reading Krishna's books like Bhagavad Gita, you are engaged. When you are hearing Krishna's teachings, you are engaged. When you are preaching to others, you are engaged. When you are doing some seva, like suppose somebody is there in the temple, coming to the temple, washing pots, or distributing books, or cleaning the temple floor, like that. So many different services are there. When you engage in like this in the service of Krishna, you derive pleasure, newer and newer pleasure and realization. So आप लोग भी preaching कर सकते हैं, श्रवणम एंड कीर्तनम। जब आपने सफिशिएंटली सुन लिया है तो आपको जब नॉलेज पता चलती है तो आप इसको प्रीच करने का अंदर से मोटिवेशन आता है, एंथुसियाज्म, नाउ आई शुड प्रीच आल्सो टू अदर्स। सो first is Shravanam, then second comes automatically Kirtanam. So when you have sufficiently heard, when you have nicely heard, automatically you will desire to preach. So now all of you have come to the state of second level, preaching. Now अब आपको न केवल सुनना ही है, सुनने के साथ साथ अब आपको दूसरों को बताना भी है। जब आप दूसरों को बताएंगे तो जो आपने सुना है वो और अच्छे समझ में आएगा। दिस इज द सीक्रेट।
अगर आपको ये लाइंस को रियलाइज करना है तो आप प्रीचिंग करना शुरू करो, देखो आप ये लाइंस रियलाइज कर जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम प्रीच करते हैं दूसरों को तो समझ में आ जाती है। दिस इज द ट्रांसेंडेंटल साइंस विच इज acting in this Krishna consciousness. Okay, this yellow highlighted portion, who will read? कौन पढ़ेगा? Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्णा। हाँ पीयूष। The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. The whole world is moving under its spell, and a materialist cannot work at all without this motivation. But a person engaged in Krishna consciousness can work with greater vigor without sex pleasure, which he avoids. That is the test in spiritual realization. Spiritual realization and sex pleasure go ill together. जैसे क्या लाइन लिखी है प्रभुपाद ने, बाहर का जो मटेरियलिस्ट होता है उसको सेक्स प्लेजर नहीं मिलेगा तो नहीं काम करेगा, ही वांट्स दैट प्लेजर अल्टीमेटली, हिज termination point is that only. But a spiritualist, he doesn't want to indulge also, and he gets inspiration from something else. He gets spiritual inspiration to serve Krishna. This is so nicely Prabhupada has written. I hope you have understood. Now this is the revolutionary sloka, but time is over. What to do? So this topic again we'll take up tomorrow, because this is the discussion which we have to understand very nicely, and it should get settled in our mind. ये श्लोक मैं जस्ट पढ़ लेता हूँ so that you get the translation. ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आदि अंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। पता है हम लोग क्यों सफर करें इस दुनिया में? Why we are suffering? Here it is explained in this verse. The secret is revealed here. Why दुख योनिया, हम लोग दुख के सोर्स में, दुख योनि में हम लोग फंसे हुए हैं। क्या कैसे हम लोगों का जो लाइफ है वो मिजरेबल क्यों है? बिकॉज यही समस्पर्श जा भोगा, जिसको हमने आनंद समझ रखा है। किसको हमने आनंद समझ रखा है? स्पर्श मीन्स टच, जा मीन्स जायते, जब टच होता है किसके किसके बीच में? सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के बीच में। जब सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, स्पर्श होता है, तो हमें आनंद मिलता है। आंख को एक ब्यूटीफुल फॉर्म, एक अच्छी लड़की दिख जाए, वाओ ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वी एंजॉय। सो यही पहली लाइन लिखा, यही संस्पर्श जब होगा, जब आपके इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से जब टच होता है तो आपको आनंद मिलता है, मजा आता है ना? और यही आनंद के पीछे पूरी दुनिया पागल है। टू सेटिस्फाई ऑल दी सेंसेस, ऑल दी ऑर्गन्स, वी आर मैड। आंख को सेटिस्फाई करने के लिए, कान को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे कैसे गाने बना रहे हैं आज, क्या क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग निकाल रहे हैं। जीभ को टेस्ट कराने के लिए क्या क्या आजकल फूड्स आ रहे हैं, एंड ऑल स्किन टच को, स्किन को अच्छा फीलिंग देने के लिए। सो लाइक दिस होल वर्ल्ड इज बिजी इन दिस इंजॉयमेंट। तो भगवान बोले भोगा, आपको आनंद मिलता है। लेकिन दूसरी लाइन देखो आप, यू विल बी सरप्राइज, दुख योनिया एवते। बट ये जो पहली लाइन जो दुनिया कर रही है, यही दुख का कारण है। ये सोर्स, ये योनि है, दुख की योनि मीन्स इट इज द सोर्स ऑफ मिजरी। ये लोगों को पता नहीं है। लोग सोच रहे हैं इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कांटेक्ट कराओ एंड एंजॉय योर लाइफ, बट उनको पता नहीं इस एंजॉयमेंट में उनको क्या भरना पड़ रहा है। दे आर गेटिंग मिजरीज। क्यों मिजरीज? ऐसा क्या है? अरे हमें तो आनंद मिलता है प्रभु जी, आप तो गलत बोल रहे हैं, आपके कृष्णा भी गलत बोल रहे हैं। नहीं, तीसरी लाइन भी पढ़ो, आदि अंतवंत कौन्तेया, ओ कौन्तेया, ओ अर्जुन, क्योंकि ऐसे इंजॉयमेंट का जो नेचर है, जो आप यहाँ पहली लाइन में एंजॉय कर रहे हैं, उसका क्या नेचर? आदि अंत। वो आदि और अंत है उसका, स्टार्टिंग एंड एंड। स्टार्ट तो होगा, स्टार्टिंग में बहुत मजे करेंगे, ओ वेरी नाइस वेरी, बट एंड हो जाएगा, इट विल गेट ओवर, डाइवोर्स हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, योर हार्ट विल बी ब्रोकन, यू विल बी स्कैटर्ड। फिर ब्रोकन हार्ट आप भेजोगे, स्टेटस पे लगाओगे, और फिर है ना इमोशनल सेंटिमेंटल कोट्स अपने स्टेटस पे डालोगे और इंस्टाग्राम पे डालोगे, टू शो ऑफ योर, टू शो योर मिजरी एंजाइटी। क्योंकि ये नेचर है इस दुनिया का, है भगवान बोल रहे हैं, तो आप गुजरोगे इसके थ्रू। नो लवर कैन बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, चाहे वो लव सक्सेसफुल क्यों ना। क्यों? अगर सक्सेसफुल भी हो गया तो एक दिन डेथ आएगा,
डेथ आएगा ना, सेपरेट करेगा किसी एक को पहले, तो जो सेपरेट होगा दूसरा वाला मिजरी में जाएगा, दूसरा वाला सफर करेगा। तो चाहे आपका लव सक्सेसफुल हो या नहीं हो, मिजरीज आर गारंटीड, बिकॉज आदि अंत, देर इज बिगिनिंग एंड एंड। इसीलिए ना ते सुरमते बुधा, दोज हु आर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिहीन है वो नहीं, बुद्धिमान जो लोग हैं, ना तेज उसमें नहीं रमते, ऐसे इंजॉयमेंट के पीछे नहीं भागते, वो कुछ और इंजॉयमेंट ढूंढते हैं। वो इंजॉयमेंट हम कल डिस्कस करेंगे। सो हियर विल स्टॉप, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? मनीष, कल आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, आई कुडंट हियर, so today you can ask, what was the question? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। हाँ अब प्रभु कुछ नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि डेस्टिनी था, तो डेस्टिनी बेसिकली मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो हमारे कर्मा है उस पे कंट्रोल होती है। तो मेरा बस वो था कि जो डिवोटीज की डेस्टिनी होती है वो कैसे वर्क करती है। डिवोटीज की डेस्टिनी जो है कृष्णा कंट्रोल करते हैं, और जो कर्मी की डेस्टिनी होती है उसको दुर्गा माँ कंट्रोल करती है। ये डिफरेंस होता है। दुर्गा माँ आपकी डेस्टिनी के हिसाब से देती जाएंगी, बट एक डिवोटी जो भगवान कृष्ण के नाम का जप कर रहा है, जो सरेंडर्ड है, जिस डिग्री में सरेंडर्ड है, कोई फुल्ली सरेंडर्ड है तो कृष्णा फुल्ली टेक ओवर कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत पार्शियली सरेंडर है, थोड़ा माया में भी है, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा मटेरियल एंजॉयमेंट भी करता है, थोड़ा चैंटिंग भी कर लेता है, सो पार्शियली कृष्णा विल हैंडल, पार्शियली माया विल हैंडल, so like that. But one who is fully surrendered to Krishna, Krishna will take care of your destiny and he will give you accordingly, whether to give or not to give. Destiny में जो है वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, that depends on Krishna. वो आपकी भक्ति के लिए क्या अच्छा है वो देंगे भगवान, because for Krishna you is important, not your achievements. Your achievements Krishna doesn't want. You is important for Krishna, because Krishna wants you to take you back to Godhead. Krishna wants you to go back to him and enjoy with him. So that is the most important business of Krishna. So therefore Krishna आपकी डेस्टिनी होल्ड करते हैं और आपकी डेस्टिनी के हिसाब से देते रहते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कृष्णा। ज्यादा भी दे सकते हैं, अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है लेकिन आपको जरूरत है तो ज्यादा दे देंगे। सो दिस इज लाइक दैट। समझ आ गया? यस प्रभु, आ गया। हाँ, थैंक किसी यू और को कुछ पूछना है? आशीष, रक्षिता, धीरज, पीयूष, चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।